Good morning, students. Today we are going to start in a revision form the chapter Consumer Protection Act 1986. As you know, students, consumer is the kingpin in the market. No market cannot survive without consumer. Right, students? So I give you a short introduction about this chapter. Right, students. Modern concept of marketing. Consumer is treated as the king of the market. Right, students, and business cannot survive without consumer. There was an earlier approach, that is, let the buyer beware, has now been changed, let the seller beware. Right? But in reality, consumer is not treated as a king. Due to growing competition and in attempting to maximize profit by selling more, some businessmen are involved in unfair trade practices like adulteration, misleading advertisement, defective products, underweight, overcharging, right, students, and many other restrictive trade practices. Therefore, there is a strong need for consumer protection, right, students? So, as per Consumer Protection Act 1986, consumer protection means protecting and promoting the consumer interest through speedy and inexpensive redressal of their grievances. Right, students? So let's start today the meaning and definition of consumer protection. Right, students? So under the Consumer Protection Act, a consumer is defined as any person who buys any goods for consideration which has been paid or promised or partly paid or partly promised. Right, students? It does not include a person who obtain goods for resale or any commercial purpose. यानी कि a person is not a consumer who purchase goods for resale or any commercial purpose. Right, students? So this is supposed to be the A point. Now come to the B point. Any person who hires or avails of any service for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised, but does not include a person who avails of such services for any commercial person. Yani a person is not a consumer who avails the services for any commercial purpose. Right, students? I hope the definition of consumer is very much clear to you. Right, students? So in a nutshell, consumer कौन होगा, students? Consumer is a person who purchase goods and services for cash. Consumer is a person who purchase goods and services for self-consumption. Consumer is a person who purchase goods and services for satisfying his or her needs and wants. Right, students? Consumer is a person who purchase goods and services with the approval of a person concerned. Right, students? A person is not a consumer who obtain goods and services for resale and commercial purpose, and a person is not a consumer who uses goods and services without the approval of buyer. I hope this definition is very much clear to you, students. So let's discuss consumer rights. As you know, students, there are 6 consumer rights. Right, students? The very first is right to safety. स्टूडेंट्स, कंज्यूमर को सेफ्टी मिलनी चाहिए ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज से विच आर हैजार्ड टू हेल्थ और लाइफ. फॉर एग्जांपल, लाइक electrical goods and pressure cookers can cause serious injury if there is any manufacturing defect in them. Right, students? So consumer have the right to be protected against such danger. Right? So this is supposed to be the very first right. Right, students? So come to the second, right to be informed. Of course, students, this is supposed to be the second right, right to be informed. Here beta, right to be informed का मतलब students ये हुआ before purchasing any product or service. Right, students? Consumer must know about the quality, quantity, purity, price of goods and services which he wants to purchase. Right, students? और बेटा manufacturing must mention complete information. जो मैन्युफैक्चरर है अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बताएगा, लाइक इंग्रेडिएंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, प्राइस, यूजेस, etc. on the label and package of the product. Right, students? I hope second right is very much clear to you. Now come to the third right. Third right means right to select or right to choose. राइट टू सिलेक्ट और राइट टू चूज का मतलब स्टूडेंट्स ये होगा
कि एक बिजनेसमैन किसी भी कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं कर सकता एक पर्टिकुलर गुड्स लेने के लिए. इट इज अ विश ऑफ अ कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर को गुड्स पसंद आएंगे तो वो लेगा, नहीं पसंद आएंगे तो नहीं लेगा. राइट स्टूडेंट्स? सो अंडर राइट टू सिलेक्ट और राइट टू चूज मीन्स a variety of products are available in the market. The manufacturer or trader should not use aggressive selling techniques to sell his particular product. Right students? He must give consumer a chance to select an alternative products available. Therefore, the consumer must always have the right to select or to choose. I hope this right is very much clear to you. Now come to the another that is known as right to hurt. Right students? Right to hurt का मतलब this is supposed to be the most important right among 6 rights of students. The right to hurt means if a consumer is dissatisfied regarding any goods and services, right, he must file a complaint under consumer court. Right students? Or he can share his problem to the customer care also. Right students? वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए कस्टमर केयर होते हैं, लेकिन कंपनी के लिए they have got their own grievances cell. Many newspapers carry the special columns regarding this so that the consumer can express their problems. So this is supposed to be the very important right that the consumer has a right to file a complaint in case of dissatisfaction with the goods or services. Right students? I hope the fourth right is very much clear to you. Now come to the fifth right. This is supposed to be the fifth right. Right to seek redressal. Right students? राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये होता है कि इफ अ कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज गुड्स और सर्विसेज ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन अ कंज्यूमर कोर्ट. राइट स्टूडेंट्स? वहाँ पर बेटा क्या होगा, कंज्यूमर कोर्ट में जब भी आप केस फाइल करेंगे तो वहाँ पर आपके फेवर में 4 बातें होंगी. वो 4 बातें कौन सी होंगी? द कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कंपनसेशन. उसको बेटा पूरा कंपनसेशन मिलेगा. राइट स्टूडेंट्स? इन द फॉर्म ऑफ मनी, replacement of goods, repair of defect in the goods or services. Right students? और उसको बेटा पूरा compensation भी दिया जाएगा in the form of money also. Right? I hope the fifth right is very much clear. The sixth right is right to consumer education. Right to consumer education में एक स्लोगन दिया गया है, जागो ग्राहक जागो. According to this right, it is the right of a consumer to acquire the knowledge and skill to be informed टू द कस्टमर. राइट स्टूडेंट्स? कंज्यूमर के पास सारे इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारे नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी वो गुड्स और सर्विसेज परचेज कर रहा है स्टूडेंट्स, उसके पास उस चीज़ की सारी नॉलेज होनी चाहिए. दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड द कंज्यूमर एजुकेशन इन स्कूल करिकुलम एंड इन वेरियस यूनिवर्सिटी कोर्सेज. राइट? गवर्नमेंट इज ऑल्सो मेक यूज ऑफ मीडिया टू मेक द कंज्यूमर अवेयर ऑफ देयर राइट्स. I hope students all the 6 rights it's very much clear to you. So the very first is right to safety. Consumer को safety मिलनी चाहिए ऐसे गुड्स से which are hazard to health और life. For example scientific instrument और pressure cooker, उसमें कोई भी manufacturing defect नहीं होना चाहिए जिससे consumer seriously injured हो जाए. Second is right to be informed. Right students? Quality, quantity, purity, price, manufacturing date, expiry date, batch number देख के goods and services खरीदे. Right to select. कोई भी बिजनेसमैन किसी भी कंज्यूमर को प्रेशराइज नहीं कर सकता है पर्टिकुलर गुड्स लेने के लिए. इट इज अ विश ऑफ अ कंज्यूमर. अगर कंज्यूमर को गुड्स पसंद आएंगे तो लेगा, नहीं पसंद आएंगे तो नहीं लेगा. राइट टू बी हर्ड, एज आई टोल्ड यू, इट इज सपोज टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट राइट. इफ द कंज्यूमर इज नॉट सेटिस्फाइड विद रिगार्डिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज ही कैन फाइल द कंप्लेंट, राइट, इन अ कंज्यूमर कोर्ट, और ही कैन फाइल अ कंप्लेंट इन द कंपनीज कस्टमर केयर ऑल्सो. राइट? वो हमारे लिए कस्टमर केयर होते हैं और कंपनी के लिए होते हैं ग्रीवियंसेस सेल. दे हैव गॉट देयर ओन ग्रीवियंसेस सेल. दे हैव सेट अप देयर ओन ग्रीवियंसेस सेल. राइट टू सीक रिड्रेसल मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स. राइट टू सीक रिड्रेसल के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, राइट, रिप्लेसमेंट ऑफ मनी, रिप्लेसमेंट ऑफ द पार्ट डैमेज्ड हो जाएगा बेटा, और बेटा जो भी कंपनसेशन हुआ है वो आपको पूरा मिलेगा. राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन मीन्स जागो ग्राहक जागो. राइट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंक्लूडेड दिस consumer education in university level as well as in school curriculum also. I hope consumer right is very much clear to you. Let's come to the next topic, and the next topic is consumer responsibility. Right students? There are 6 consumer responsibility. The very first is consumer must exercise his rights. Consumer को अपने rights use करने आने चाहिए, जो भी rights आपने ऊपर पढ़े हैं.
right students? So consumer must exercise their rights before purchasing or buying any goods and services in the market. Cautious consumer, सावधानी पूर्वक गुड्स खरीदना, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी, प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, right students? This will ensure a better purchase. Now come to the next one, filing complaint. It is the responsibility of a consumer to file a complaint under the consumer protection, right? Consumer must file a complaint in appropriate forum. As you know, there are 3 types of forum: district forum, state commission, and national commission. We will discuss one by one. Consumer must be quality conscious. As I told you earlier, there are various certification mark like ISI mark इलेक्ट्रिकल गुड्स पे होते हैं स्टूडेंट्स, FQ मार्क फूड प्रोडक्ट्स पे होते हैं, हॉल मार्क डायमंड ज्वेलरी पर होते हैं स्टूडेंट्स, राइट? एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर होते हैं. बिफोर परचेसिंग दीज गुड्स, राइट, कंज्यूमर मस्ट लुक आफ्टर द सर्टिफिकेशन मार्क्स, राइट? नेक्स्ट इज बेटा, कंज्यूमर मस्ट इंसिस्ट ऑन कैश मेमो. बिल लेना बहुत जरूरी है, राइट? अगर आपने बिल नहीं लिया है, इट इज द ओनली प्रूफ ऑफ परचेज. अगर आपने बिल नहीं लिया है तो आप उस मैन्युफैक्चरर, उस ट्रेडर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते, राइट? अ कंज्यूमर इज बाउंड टू हैव अ कैश मेमो, राइट स्टूडेंट्स? और एक सेलर को भी बेटा कैश मेमो देना चाहिए. इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंज्यूमर टू टेक द कैश मेमो, और इट इज अ seller, and seller is bound to give a cash memo. I hope the 5th responsibility is very much clear to you. Now come to the another responsibility of a consumer protection, that is difference in the advertisement, right students? If there is any difference in the advertisement में अगर कोई difference होता है, difference किस sense में होता है students? Suppose करिए कि products के अंदर जो features advertisement में दिखाए जा रहे हैं वो products के अंदर नहीं निकल रहे हैं. So this cause a difference in the advertisement. Advertisement में कुछ और बताया जा रहा है और product में actual में वो नहीं है. So this difference can also be brought to the notice of the manufacturer, or on the basis of that difference you can also file a complaint in a consumer court. This is supposed to be your 6th responsibility. I hope the consumer rights, consumer responsibility and meaning is very much clear to you, right students? So we will discuss the next topic, and the next topic is importance of consumer protection. So students, importance from consumer point of view, there are 3 importance, and importance from business point of view there will be 6 importance, right students? So importance from consumer point of view, very first is consumer ignorance. Because of widespread exploitation of consumer, it become necessary to set up the Consumer Protection Act 1986. आज भी बेटा हमारे इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सारी कैटेगरी के लेवल के कंज्यूमर्स हैं जो कि कंज्यूमर राइट्स को नहीं जानते हैं, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं जानते हैं, राइट? इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट दोज कंज्यूमर फॉर द सेम टू अचीव कंज्यूमर अवेयरनेस, राइट? सो कंज्यूमर इग्नोरेंस, दैट इज सपोज टू बी द फर्स्ट इंपॉर्टेंस फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट स्टूडेंट्स? कि कंज्यूमर को इग्नोरेंस है आज भी बहुत, तो कंज्यूमर के पास उनको इग्नोर ना हो वो, तो कंज्यूमर मस्ट नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. Unorganized consumer, students, in a developing country like India, consumer are not organized. There are very few consumer organization which are working to protect and promote the consumer interest, right students? ऐसी, लेकिन nowadays students, there are various NGOs, non-government organizations and various other organizations protecting and promoting the interest of consumers, right students? So कंज्यूमर प्रोटेक्शन एनकरेजेस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. और ये किसकी हेल्प से होगा? ये हेल्प से होगा इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, राइट स्टूडेंट्स? नाउ कम टू द थर्ड स्टूडेंट्स. थर्ड इंपॉर्टेंस इज वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, राइट, फॉर मेकिंग क्विक प्रॉफिट्स, राइट स्टूडेंट्स, बाय बिजनेसमैन. दे अडॉप्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, एक्सप्लॉयट द कंज्यूमर, राइट, अप्लाई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. So consumer is going to be the kingpin in the market, but consumer protection provides safeguard to consumers from such exploitation, right students? So there is a strong need for the Consumer Protection Act 1986. I hope students these 3 importance are very much clear to you. The very first is consumer ignorance, right students? So under consumer ignorance में अगर आपने देखा कि consumer
को अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। अगर कंज्यूमर को अपनी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी पता नहीं होंगी तो वो कंज्यूमर इग्नोर्ड रहेगा, कंज्यूमर अवेयर नहीं रहेगा। सेकंड इज अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं जो कंज्यूमर का केस अपने बिहाफ पे लड़ती हैं, एंड नाउ डेज बहुत सारी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओस उनके बिहाफ पे काम कर रही हैं, राइट स्टूडेंट्स, जिससे कि कंज्यूमर प्रोटेक्टेड फील कर सकें। सो that is supposed to be the next importance that comes under Consumer Protection Act. Third is widespread exploitation of consumer. Right students, for making quick profits, consumer businessman के साथ, right students, businessman consumer के साथ कोई cheating ना करे, black marketing ना करे, hoarding ना करे, इसी वजह से Consumer Protection Act consumer के लिए जरूरी है। I hope these all three importance is very much clear to you. Now come to the next part. The next part, student, is importance of consumer from business point of view. There are 6 importance of consumers from business point of view, students. Let's discuss one by one. Long term interest of business. Students, the very first is long term interest of business. अगर किसी भी बिजनेसमैन को लंबे टाइम के लिए बिजनेस करना है तो वो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ध्यान में रख के बिजनेस करेगा, कीपिंग इन व्यू इन माइंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर, राइट स्टूडेंट्स। ओनली देन the businessman can win and capture a bigger share in the market when he satisfy the consumer by making the goods and services available at right quality and keeping in mind the requirement of the customers, right students। कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गुड्स बनाएगा और कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए वो गुड्स बेचेगा उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, right students। The businessman who ignore this interest can lose the goodwill and clients and customers at the same time. Moral justification क्या कहता है? Moral justification ये कहता है students, it is the moral duty of a businessman not to make any unfair trade practices, any unsafe products, false or misleading advertising, black marketing, hoarding ना करे। अगर स्टूडेंट उसने ये सब किया है तो बेटा वो कभी भी बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्ग रन में नहीं चला पाएगा, राइट स्टूडेंट्स, उसका बिजनेस डाउन हो जाएगा, right students। So it is a moral duty of any businessman to take care of the consumer interest and avoid any form of exploitation, right students। Now come to the next one. The next one is, students, society resources, supply high quality products at reasonable price, right student, and providing goods and services as per the need demand of the customers। social responsibility importance बेटा ये कहती है कि आप जो भी गुड्स हैं वो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए बनाए, कस्टमर की नीड, टेस्ट, प्रेफरेंस, डिमांड के हिसाब से बनाए, राइट स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द नीड, प्रेफरेंस एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर्स, एंड प्रोवाइडिंग द राइट क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस। दिस इज सपोज टू बी द फोर्थ social responsibility that comes under consumer protection। Government action, students, of course, now under government action, government is seriously take action if businessman is caught by using any unfair trade practices or restricted trade practices to the consumer or against consumer while selling goods and services. This would spoil the image of a business and उससे जेल भी हो सकती है बेटा, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, पेनल्टी भी हो सकती है और लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। सो गवर्नमेंट इज रेडी टू टेक एक्शन। देयरफॉर फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू द businessman must respect and produce goods according to the need, requirements, demand, taste, preference of the customers, right students। Public support, this is supposed to be the sixth subheading, public support। Business does not exist in a vacuum, students। Financial institutions and banks are ready to give the finance to the businessman. Government is also giving various types of support, incentives, subsidies, etc. Right? Consumers are ready to buy the goods if he gets maximum satisfaction and maximum utilities from the products and services. So it is the moral duty of a businessman not to produce any products which can cause harm to the consumers, right, and which can exploit the consumer. That comes under public interest. I hope all the 6 importance are very much clear to you, students. The very first is long-term interest of a business, right students। Second one is moral justification। long-term interest of a business में आपने क्या पढ़ा था students? long-term interest of businessman में आपने पढ़ा था कि satisfy करना consumer को by making the products as per the requirement of the customers। moral justification not to
make any unfair trade practices, unsafe products, false or misleading advertisement, black marketing नहीं करनी चाहिए किसी businessman को. Society resources, right students, to make and product goods as per the needs and requirement of the customers, right students. Social responsibility, अच्छी क्वालिटी की goods reasonable price पर बेचना. Government action, right students, government is taking a serious action if businessmen can caught while making any unfair trade practices or restrictive trade practices to the consumer. And public support, you know it very well. Public support include करता है बेटा, there are various types of public support, right? Business, for a businessman, bank can give loan, financial institutions can give loan. Government is also providing various types of supports, incentives and subsidies. Employees are doing their best while selling their goods of a businessman, of a manufacturer, and consumer is ready to purchase the goods if he gets the goods at right quality, right, and having the maximum utilities. So it is the basic requirement of a businessman, right, that he does not exploit his customers. I hope the importance is very much clear to you students. So let's discuss the next topic.